दे शुरू करो। समझाई दो। बुक दे। सेवन के क्वेश्चन आंसर्स का 5 के सारे इसमें। हाँ ठीक है, ये तो है। नहीं कर रही। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फॉरेनहाइट स्केल क्या होता है? 312 312। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेंटीग्रेड स्केल पे? बॉइलिंग और फ्रीजिंग। बॉइलिंग पूछ रही हूँ। 100 डिग्री। आइस पॉइंट ऑफ वाटर इन फॉरेनहाइट स्केल? 32 डिग्री। And in that centigrade scale? 0 डिग्री। Define calorie. पीछे। One calorie is defined as the amount of heat energy that is used for boiling 1 kg of water by 100 1 degrees kg of water in kg. gram. So फिर it is defined as the heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 0 degree. 1 degree Celsius. what are 3 modes of transfer energy? Conduction, convection, radiation. Conduction के spelling? CONDUCTION. Convection? CONVECTION. Radiation? RADIATION. Define insulator. Insulator. Bad conductors of heat are known as insulators. बस यही कर रहा है. Bad conductor means which do not allow easy transfer of heat to pass through them. define sublimation and deposition. Sublimation, a conversion of solid directly into gas, is known as sublimation. On ये मैंने बोलने हैं. Is known as किस sublimation. पे? किस में सॉलिड जो है वो गैस में चेंज होता है, क्या करने पे? On तो heating. फिर ये बोलना नहीं है. कन्वर्जन की स्पेलिंग? CONVERTION. क्या? TIUN. SION. Directly. DIRECTLY. Heating. HEATING. Deposition. The conversion of the conversion of gas into solids on cooling. Differentiate between linear and superficial and cubical expansion. Linear expansion on heating, the increase in length. दूसरा. Superficial. On heating, the increase in area. Cubical expansion. On heating, increase in area, volume. On Heating. volume के spelling? VOLUME. Increase. INCREASC. Area. AREA. Length. LENGTH. Mercury is conductor of heat or not? Yes, it is a conductor of heat. 1 joule. What is the relation of joule and calorie? Joule and calorie. 1 calorie is equal to 1 4. calorie. 1 calorie is calorie. equal to 1 calorie is equals to 4.2 joule. Sure. तो ये क्या है? वो जूल टू कैलोरी है. तो उसका क्या होता है? 1 joule is equals to 0.24 calorie. What is the unit of energy? Calorie. एक और है. Joule. Temperature of normal person in degree centigrade is 37 degree. and in Fahrenheit scale is 98.6 degree Fahrenheit. and in Kelvin scale is 310 what? Kelvin.
डिग्री डिग्री केल्विन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? डिग्री लगता। डिग्री स्केल नहीं है ये सारे? इनमें तो नहीं लगा हुआ। ओनली केल्विन। हाँ, ये डिग्री फॉरेनर है, डिग्री तो यहाँ क्यों लगाया होगा? ब्लैक एंड डल surfaces are dash of heat. Absorber. Spelling of absorber. ABSORBER. Still air is dash of heat. Insulator. Spelling of insulator. INSULATOR. Convert, ये तो कराते पड़ेगा. Why cooking utensils are made of copper? Because copper is a good conductor of heat, so that's why cooking is easy. ये भी conversion है numerical. Why shall gap is left in between railway tracks? Because the railway lines expand in summer, they need space, so gap is provided to them to allow expansion. What is the spelling of expansion? EXPANSION. Provided. PROVIDED. Require. REQUIRE. Space. SPACE. Summer. SUMMER. Tracks. TRACKS. These are also numerical. Define heat. Give examples of heat energy and define units of heat. Heat is the form of energy. Heat can be defined as the form of energy which causes sensation of warmth and coldness. For example, in refrigerators and air conditioners, we draw heat and throw it in the atmosphere to get coldness. Burning of fuel in the engine gives heat. Produces heat. And units of heat energy. 1 calorie वाला तो सुना दिया. इसमें ये भी लिखना. Define that calorie. बोलो. क्या लिखना है? कैलोरी बतानी है. डेफिनेशन तो बता तो दी है. दोबारा नहीं बोल सकते. 1 calorie is the amount of energy. Which energy? Heat energy that is used to raise the temperature of. वो को दिखाना. किलोग्राम है कि ग्राम है? 1 gram है. हाँ, तो किलोग्राम को लिखा हो. Raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं? 1 calorie is equals to 4.2 joules. और 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होती है? 1000. ये भी बोलना. What is temperature? Explain different scales of temperature. Temperature is the degree of hotness or coldness of an object. Degrees of temperature. Different types of scales. Scales of temperatures. Fahrenheit scale. Ice point of this scale is Fahrenheit. Ice point of this scale is 212. ये ना? Ice point. Ice point is 212. Lower point ice point होता ना? So what is the lower point on the scale? 32 degree Fahrenheit. The scale of each point is divided into 130 equal parts. Kelvin scale. Ice point of this scale is 0 degree Celsius. बोल क्या रही है? और तू सोच समझ के बोला कर. ब्लाइंडली ना बोला कर. बिना सोए सोए बोली रहती है. बोल. केल्विन स्केल रही है, बता तू सेल्सियस स्केल कर रही है. आइस पॉइंट 0 नहीं होता. बोला क्या तूने? केल्विन. हाँ, ये केल्विन का. सेल्सियस. तो फिर मैं क्या बोल रही हूँ? सेल्सियस स्केल. Ice point of this scale is 0 degree Celsius. The scale of each point is divided into 100 equal parts. Kelvin scale. Ice point of this scale is 273 Kelvin.
The scale of each point is divided into 100 equal parts. Scale of each point or scale between these points is divided. Scale between these points. Fahrenheit के spelling. FAHRENHEIT. Celsius. CELSIUS. Kelvin. KELVIN. Temperature. TEMPERATURE. Degree. DEGREE. Hotness. HOTNESS. Coldness. COLDNESS. Object. OBJECT. Point. POINT. Discuss effects of heat in detail with examples. Effects of heat. Change in temperature वाला. Change in temperature. The temperature of iron rod is hotter than the wood. Piece of iron is hotter and temperature कैसे hot The होगा? piece of iron is hotter than the wood. It shows that the temperature of a substance depends on the nature of the material and amount of heat supplied. Example दूसरी. When teapot containing water is kept on the sim mode of cooking stove, the temperature of the water rises slowly, but when it is kept on the high mode, the temperature rises quickly. Change in size. Change in size. A cart of a wheel is fitted with the कौन सा बोल रही है? change in size. ये तो एग्जांपल्स बोल रही है ना तू? हाँ. वो बोल. क्या वो भी एग्जांपल ही है? वो चेंज इन किसकी है? तो चेंज इन साइज की बोल रही है. हाँ. ये किसकी थी? दोनों. चेंज इन टेम्परेचर. बोल चेंज इन साइज की बोल रही है ना वो. Wheel of a cart is fitted with the flat iron rings. By heating the rings red hot, by heating them, they are easily able to fit in the wheel. This increase the size of the rings. This increase the size of the We're rings. just telling about change in size. This increase
the size of the rings so it fits easily on the wheel. आगे. Rubber ring of a pressure cooker lid becomes loose after use. The size of the rubber rings increases when heated time and again. ये क्या क्या लिखा है? Rubber ring of pressure cooker lid becomes loose after use. ये लिखा है मैंने. हाँ, फिर आगे क्या? Its size increases when heated time And again. यही है. आगे कहाँ है इसका? आगे है ही नहीं, यही है. आगे change in state. change in temperature, change in size and change in state. हर एक की कितनी कितनी दो दो एग्जांपल्स हैं. दो दो नहीं थी, एक एक ही थी. आपको ही था कि दो दो करनी. कोई नहीं, फिर क्या एक्स्ट्रा कर लिया तो. Ice melts on heating and changes into water. On further heating, water at 100 degrees Celsius. What water? On heating, the हीटिंग पे वाटर क्या करता? the water melts. Water melts. Boils. The water boils at 100 degrees Celsius and changes into steam. When the steam is cooled, it changes into water, and on further heating, and on further cooling, water freezes at 0 degrees Celsius. 4 है कि On further cooling to temperature सीधा बोल दे. 4 डिग्री है. on further cooling, देख टेम्परेचर क्या है? -4 है. 4 देखो -4 माइनस है ये. कूलिंग माइनस में होती है. फ्रीज करना हो किसी चीज को तो वो माइनस में ही होती है. On further cooling to -4 degrees Celsius, it changes into ice. तेको नहीं पता स्नोफॉल कब होता है? माइनस में. तो फिर वाटर के स्पेलिंग HOTTER. पीस PIECE. डिपेंड्स DEPENDS. नेचर NATURE. मटेरियल METERIAL. अमाउंट AMMOUNT. सप्लाइड SUBBLID. कंटेनिंग CONTAINING. केप्ट KEPT. सिम SIM. कुकिंग COOKING. स्टोव STOVE. स्लोली SLOWLY. राइजेस RISES. क्विकली QUICKLY. फिटेड FRTTED. रिंग्स RINGS. रबर RUBBER. प्रेशर PRESSURE. कुकर COOKER. लूज LWSE. फर्दर FURTHER. हीटिंग HEATING. स्टीम STEAM. कूल्ड COOLED. What do you understand by expansion and contraction with change in heating? We know that the size of the substance increases upon heating. A substance generally expands on heating and contracts on cooling.
The change in temperature of a substance on heating and cooling is known as thermal expansion. Change in temperature on heating and cooling. Change in size. एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वही होगा. चेंज इन हीट एनर्जी. Liquid and gases show different change in their volume. ये है ना? According to their nature for same rise in temperature. बड़ा एक्सपेंशन. confusing था ये last क्यों वाला. उन्होंने बोला कि आप क्या अंडरस्टैंड करते हो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से जब हम चेंज इन हीट करते हैं तो सॉलिड का अलग चेंज होगा तो लिक्विड और गैस का वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपने वॉल्यूम का डिफरेंट चेंज बताएंगे एक्सपेंशन और उसका क्या है इसमें डिफिकल्ट. एक्सपेंशन की स्पेलिंग EXPAN थर्मल. SION THERMAL लिक्विड LIQUID डिफरेंट. DIFFERENT. अगर ये इसमें से अगर आपको एग्जांपल भी पूछ लेते हैं गिव एग्जांपल्स तो हम सॉलिड के केस में दे सकते हैं एग्जांपल रेलवे ट्रैक की tracks. एंड लिक्विड की फॉर्म में दे सकते हैं किसकी Boiling of water. बॉइलिंग ऑफ वाटर दे सकते हैं वो स्टीम में चेंज हो जाती है. और अगर गैस की देनी हो तो Cooling of gas. उससे क्या होगा उससे वो वाटर में हाँ, चेंज हो जाएगा. तो ये एग्जांपल्स हैं इनकी. एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. Just like good conductors and bad conductors of electricity, there is also good conductor and bad conductor of heat. Good conductors aluminium, copper. Bad conductors air and vacuum. एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द गुड कंडक्टर एंड बैड. बट एक्सप्लेन करना है ना हमने गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. डेफिनेशंस भी लिखनी है ना इनकी. विच अलाउ क्या इसकी वो थोड़ी ना क्या आते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. which allow easy transfer of heat to pass हाँ through तो them, ये इनके एग्जांपल लिख देनी है. तो बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं which does not allow विच डू नॉट अलाउ. which do not allow हाँ तो फिर easy क्या transfer मुश्किल है of इसमें. heat. उन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये लिखने के बाद उनकी डेफिनेशंस फिर एग्जांपल्स लिखने हैं. एग्जांपल उन्होंने लॉन्ग वाली तो नहीं बोली. देख लो क्वेश्चन नंबर 5. है तो नहीं इसकी ज्यादा एग्जांपल. यही नहीं है छोटे छोटे दिए नहीं है बट ये है कि मैं ये बोल रही हूँ कि पहले उनकी डेफिनेशन ये लिखने के बाद उनकी डेफिनेशन फिर एग्जांपल लिखनी है फिर उसकी डेफिनेशन बैड की फिर उसकी एग्जांपल ऐसे लिखते हैं. तरीका होता है लिखने का एक. इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग ELECTRICITY कंडक्टर्स CONDUCTRES ERS CONDUCTERS ERS conductors ये होता है. ORS कॉपर COPPER एल्यूमिनियम इसमें डबल एल नहीं ना होता. नहीं. ALUMINIUM वैक्यूम VACCUM ये भी गलत लिखे हैं. VACWM वोल्ट एंड टाइम्स. VACWM पेंसिल रख ठीक करो उसमें. And how many ways heat is transferred? Explain each mode.
इसकी डेफिनेशन बोलनी है. Heat transfers from the temperature heat transfers from the higher temperature to lower temperature from the object at higher temperature. from the object at higher temperature to lower temperature till they attain the same temperature. फिर उसके बाद आ गया conduction. It is the process of heat transfer from one end to another end of the object such that from one particle to another particle heat flows from heat passes नहीं हो सकता. heat flows है ना from one particle to another. Convection. It is the process of heat transfer by way of actual motion of the particles of a medium being heated. Radiation. It is the process of transfer of heat from a hot object to cold है ना, from hot object to cold object even in the absence of a medium. Transfer की spelling TRANSFER. higher हैं? higher HIGHER. lower LOWER. attain ATTAIN. till TILL. process PROCESS. conduction CONDUCTION. इनकी तो मैं एग्जांपल देनी है अब. particle PARTICLE. एग्जांपल तो लिखी हुई है इनकी. and how many ways it हाँ तो देनी है, क्यों नहीं देनी. रेडिएशन के स्पेलिंग RADIATION लिखवाई थोड़ी ना, अब क्या करूं. In how many ways absence explain each mode. absence ABSCNCE. medium MEDIUM. क्या दी हुई एग्जांपल उन्होंने कंडक्शन की. कंडक्शन की Boiling- उन्होंने दी हुई है. फॉर boiling एग्जांपल while cooking central तवा. part of metallic तवा. plate tawa is heated by the flame of gas stove, but soon the whole iron plate becomes hot. हाँ It yes. happens because of conduction. हाँ तो जब हम तवा रखते हैं तो सेंटर का पार्ट रखते हैं ना गैस के ऊपर, तो पर सारा तवा कैसे गर्म होता है कि हीट क्या करती है, सारे तवे को गर्म कर देती है, स्प्रेड हो जाती है. तो इट इज दिस प्रोसेस इज डन अंडर कंडक्शन. कन्वेक्शन का क्या है. गीजर. इसका है transfer of heat in liquids and gases is mainly by convection. Liquids and gases expand when heated. और लिक्विड जब उसमें स्टीम में चेंज हो जाता है और स्टीम को जब गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है पार्टिकल्स. और रेडिएशन की क्या है. सनराइज. सन रीचिंग द अर्थ मतलब सन पे जब सनलाइट पड़ती है तो चीजें क्या हो जाती हैं, गरम. इसमें मीडियम तो कोई भी नहीं है, डायरेक्टली वी आर गेटिंग द सनराइज एंड गेटिंग हॉटनेस. यही है. इन हाउ मेनी वेज हीट इज ट्रांसफर्ड एक्सप्लेन ईच मोड. एक्सप्लेन ही करना है और ये भी लिखना है पहले कि हीट इज ट्रांसफर्ड इन 3 वेज, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो फिर उनको एक्सप्लेन, तो ऐसा क्वेश्चन का वे होता है लिखने का. व्हाट इज थर्मल फ्लास्क, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. It is a special flask that does not allow easy transfer of heat. By keeping it insulated. By keeping it insulated in the surrounding. हेलो जस्ट जी अमेजिंग जो भी जी. भाग आगे. Construction.
कंस्ट्रक्शन, यहाँ तो थर्मोस बोलो, तो यहाँ थर्मल फ्लास्क। थर्मस भी कहते हैं उसको। हाँ, तो दोनों लिखी हुई है, थर्मोस फ्लास्क। तो थर्मस या कहते हैं उसको। थर्मस अकेला बोलो या थर्मल फ्लास्क बोलो। थर्मल प्लस फ्लास्क इज थर्मस। बोलो आगे। थैंक यू। Thermal flask has a double-walled glass bottle. There is no air between the walls. There is vacuum between the walls. Working. Working. नॉट वर्किंग क्यों, ये नहीं बोलना है। अच्छा. Bottle is placed on a cushion-like cork हेलो जस्सी जी। that is बाय, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। the bottle is kept on the cushion-like cork. That is placed inside a plastic case. The cork saves the glass from breakage and shocks. Mhm. The thermal flask has a stopper and a cap. आगे। Working. ये थी इसकी Construction. When hot liquid, say tea, is poured in the thermal flask, the vacuum, ये है ना? द माउथ। अच्छा, the mouth of the flask is plugged by tightening the cap. The vacuum between the the bottle उसके लिए भी धन्यवाद जी। the vacuum between the bottle does not allow transfer of heat by convection and conduction. The silvered wall inside and outside of the bottle do do not allow transfer of heat. उसके बाद था कि the liquid inside the thermal flask can remain at the same temperature for the long time. read it properly Raghu. Flask, FLAS, plugged, PLUGGED, tightening, TIGHTENING, vacuum, VACUMMING, VACWM, bottle, BOTTLE, sorry, silvered, SILVERED, transfer, TRANSFER,
Stopper. STOPPER. Bottle. BOTTLE. Cushion. CUSHION. Kept. KEPT. Cork. CORK. Plastic. PLASTIC. Breakage. BREAKAGE. Shocks. SHOCKS. Mouth. MOUGHT. Walled. WALLD. Double. DOUBLE. Glass. GLASS. Special. SPECIAL. Insulated. INSULATED. Keeping. KEEPING. Surrounding. SURROUNDING. ये क्या है? वो उसका है 2 मिनट। क्वेश्चन है ये क्या? नहीं क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो इतने थे। 7 ही था इसके। ये तो है ही नहीं कहीं। ये क्या है? आंसर 14 देखा। 14 आंसर 7 ही है इसके तो। देख काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ दिया होगा इसका। 7 ही क्वेश्चन है इसका, तो कुछ नहीं दिया। एंड इसका यहीं पे है। नहीं क्वेश्चंस में देख कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन किसी की नहीं। ये मेरे यार ख्याल से पिछले का एक्सरसाइज में देख क्या कर रही है। नहीं है, दिखा तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। वो तो ये एक्स्ट्रा है। दी मेरे ख्याल से। ये थोड़ी ना है, थोड़ी ना बनाया हुआ है। At what voltage and उसका तो नहीं है। हाँ at what voltage and पहले ये तो सुन frequency। लो चैप्टर 7। ये भी तो है यार वो एक्स्ट्रा है, उसको बाद में कर लेना। कितने क्वेश्चंस है इसके? कितने ज्यादा थे मेरे ख्याल से। 13। 13 ही थी। State and demonstrate the law of magnetism. Law of magnetism. Like poles repel each other and unlike poles attract each other. और इसका वो था, मतलब एक ये था ना इसका, when similar poles of south and north are placed together of two magnets are kept together, they repel each other, but the opposite when the opposite poles like south north and north south of two magnets are placed together, they attract each other. So this shows that like poles repel each other and unlike poles attract each other. like के spelling LIKE. poles POLES. repel REPEL. unlike UNLIKE. attract ATTRACT. उसका क्या है? south SOUTH. north NORTH. और क्या था? broad BROUGHT. closer CLOSCR. what is the shear test of a magnet? Explain how will you test that the given rod is a magnetic or not. Repulsion is the shear test of a magnet. इसका यही है कि उन्होंने जितना पूछा उतना बताया, अब उसका एक्सप्लेन करना है। प्रोसेस hang one of the given rod from the middle with the help of hook. हुक के हुक यार मैं बोलने में हो जाता है। hook, string and laboratory stand. Place नहीं,
इसका था कि bring the magnet near both of the ends of the both the ends of both rod. the ends of the rod, and if there is attraction One by one. and if there is attraction in both the cases, then the given rod is not magnetic. फिर hang उसके बाद hang the other rod. hang the other rod उसके बाद था bring the magnet near both the ends of the rod one by one, and if there is attraction in one case of the end and repulsion क्या था repulsion in the case of another end, then then the given rod is magnetic. ये क्या था मुझे बुक वाला इजी था. क्या यही है बुक वाला? रिपल्शन के स्पेलिंग REPULSION. क्या रिपल्शन के क्या स्पेलिंग होते हैं? रिपल्शन REPULSION एस होता TION. यार SION नहीं था, SION है. ये क्या? गलत लिखा होगा. मिडल MIDDLE. हुक HOOK. स्ट्रिंग STRING. लेबोरेटरी LABORATORY. स्टैंड STAND. मैग्नेट MAGNET. ब्रिंग है ब्रिंग BRING. अट्रैक्शन ATTRACTION. मैग्नेटिक MAGNETIC. हैंग HANG. रिपल्शन REPULSION. next. What is electromagnetism? Show that current carrying conductor has a magnetic effect around it. Electromagnetism is a branch of physics that deals with the interaction taking place between electricity and magnetism. उसके बाद क्या बताना है? एक्टिविटी है उसके बाद प्रोसीजर. तो मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं लिखा होता है आपको? सर कहते लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, तो मैंने कहा चलो रहने दो फिर रहने दो. प्रोसीजर pass the wire through two holes of the cupboard. क्या है? सॉरी कबर्ड कह रही हूँ, कार्डबोर्ड. to the cardboard. Place the compass below the wire. Adjust the cardboard such that the needle of the compass becomes parallel to the wire. Connect the two ends of the wire to the cell through a switch. फिर ये switch on. Switching on the current. Switch on the current. Switching on the current. After switching on the current, the magnetic needle of a needle of a compass will change its position. Position के spelling? PUSITION. Compass. COMPASS. Magnetic. इसकी फिगर भी बनानी है. Magnetic. डायग्राम्स तो करने ही पड़ेंगे सारे ही. कितने सारे डायग्राम है? बता दूंगी कौन कौन से करने. बता दूंगी क्या, सारे ही करने पड़ेंगे. Needle. NEEDLE. Current. CORRENT. Switching. SWITCHING. Connect. CONNECT. Wire. WIRE. Through. THROUGH. Cardboard. CARDBOARD. Adjust. ADJUST. Parallel. PARALLEL. Below. BELOW. Through. THROUGH. Branch. BRANCH.
Physics. PHYSICS. Interaction. INTERACTION. Taking. TAKING. Electricity. ELECTRICITY. Magnetism. MAGNETISM. Sorry. What is Earth's magnetism? Earth's magnetism. Earth's magnetism. Magnetism of the Earth is due to relation. क्या था? Earth is due to relation between magnetism and electricity. It is believed that the rotation of the Earth causes electric current. In the electric currents क्या आगे भी है? बस यही है. लग रहा है वो. हाँ. What is Earth's बस ये magnetism? पूछा उन्होंने. दिखाना जरा. मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ. मेरे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए. मैं तेरे को कहा था ये बढ़ाने के लिए. नहीं ये कब कहा? इसका थोड़ी ना कहा था ये. आंसर 29 ये देख, ये भी आंसर 29 है. वो तो पुरानी बुक में मार्क किया हुआ है ना. These electric currents in the conducting matter of the earth produce magnetic field. इफेक्ट. इफेक्ट है, फील्ड नहीं है. बट यार उन्होंने सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा. हाँ, उन्होंने पूछा कैसे बनता है ये जो इलेक्ट्रिक करंट है. ये क्या करता है? These currents in the conducting matter of the earth produce magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड. समझ आई? इधर दिखाना 2 मिनट. ये भी है. ये तो नहीं लिखना. इम्पोर्टेंट नहीं, ये अलग से. वैसे क्या है ये आंसर 29 थोड़ी लिखा हुआ है. नहीं वो तो इतना ही लिखा. ये तो अलग से डायग्राम आता होता है. ये इम्पोर्टेंट. सारे इम्पोर्टेंट है, इसमें एक ही थोड़ी ना इम्पोर्टेंट. कह रही है ना, हाथ लाता है ना. बोल आगे. These electric currents in the conducting matter of the earth produces magnetic field. मैं बाद में लर्न करूंगी. कर ली, छड्डी ना. बाहर से रस देना मुझे. इम्पोर्टेंट है. रस पड़ा होगा टेबल पे. ले तू भी खा ला. भूख लग रही है. मैं तो खाना भी नहीं खाया. तो नहीं खा के और भूख लग रही है. डेरिवेशन अभी इसका. तेरा क्वेश्चन है. टेबल पे नहीं पड़ा लिफाफा. नहीं, किचन में ब्लैक लिफाफा है, उसके ऊपर उसमें होएगा. किचन में ब्लैक लिफाफा है, उसमें. सारा क्यों उठा लगती होती है खिलारा. ध्यान में करा वो. इसके कितना थे. क्यों भी पढ़ाओ और इसकी मर्जी. What is an electromagnet? What are its uses? How will you form an electromagnet? दो मिनट खा लूं. An electromagnet is a piece of soft iron
ये है ना, through which magnetism is produced, because of the electric current, because of the flow of the electric current through an insulated wire wound around it. Uses of electromagnet. They are used in the loudspeakers. They are used in the motors, कौन सी मोटर्स? electric motors. आधे वर्ड क्यों बोलती है? और फिर they are used in loudspeakers. They are used in electric motors. They are used in the electric bulbs. अब construction. Wind the wire है ना, wind the wire around a nail. वाइंड का स्पेलिंग क्या है? डब्ल्यू आई या डी? WIND. Wind. ये तो विंडो हो गया फिर। वाइंड विंड हमने होमोफोन्स नहीं किए थे, होमो निम्स ऐसे कुछ किए थे जिसकी स्पेलिंग सेम थी, वो है। वाइंड द वायर अराउंड द आयरन नेल। आयरन नेल नहीं है ना, सिंपल नेल, वो तो सेम ही होती। चलो, अराउंड द नेल, connect the two ends of the wire to the battery through a switch. दो इसका ये पेपर पिन्स वाला ना, switch on the current, bring the paper pins near the nail. You will see that the nails are attracted towards the the Pins. paper pins are attracted towards the nail. Now switch off the current. The paper pins will fall. अब इसका वो भी है रिजल्ट। A coil carrying current. A coil carrying current act as an electromagnet. क्वेश्चन आना रागी। यार मैग्नेटिज्म मुश्किल वाला बोल दो आप। प्रोड्यूस है, इंपॉर्टेंट है तो। प्रोड्यूस के स्पेलिंग PRODUCD। मम्मा बुक में इन्होंने करंट 6 यूजेस दिए हैं। करंट CORRENT। ये सर ने लिखवाया हुआ? और सर ने तो नहीं लिखवाया हुआ, ये हमने खुद ही लिखे हैं। इंसुलेटेड फिर 3 क्यों लिखे हैं? और मैं 6 के सारे लिखूं? 4 कर लेने ही। और किसमें यूज हो रहा? They are used in the electric circuit बस ये लिख breakers. देना। लिख आगे दो। क्या? They are used in the electric circuit breakers. ब्रेकर्स क्या? They are Used in the electric circuit breakers. used in the Electric circuit breakers. इसे 5 ही लिख लो, इससे 4 ही लिख लो। 5 लिख लेना। रैम। आगे स्पेलिंग इंसुलेटेड INSULATED. स्पीकर्स SPEAKERS. मोटर्स MOTORS. सर्किट CIRCUIT. ब्रेकर ब्रेकर BREAKER. काउंट कर दो। राउंड AROUND. मेल मेल NAIL. कनेक्ट CONNECT. बैटरी BATTERY. थ्रू THROUGH. स्विच SWITCH. करंट हो गया। अट्रैक्टेड ATTRICTAD. कैरिंग CARRYING. कॉइल Coil.
COIL. सबसे बड़ा क्वेश्चन. What is an electric bell? Give its construction and working. It is based on the principle of electromagnetism. Construction. You know construction. Coil. Coil है. Insulated copper wire. Is wound closely around the soft iron core. ये पूछ रही थी मैं क्या. Soft iron strip. It is fixed to face towards the pole of electromagnet. Adjusting screw. Adjusting screws. Sound of the bell can be changed with the help of adjusting screw. फिर था 3 हो गए. Hammer and gong. ये है ना. The hammer is attached to the soft iron strip and the gong is cup shaped. The hammer strikes the gong to produce sound. Switch. Switch to on and off. Switch to on and off in the circuit. Battery provides voltage. Only this much? नहीं, working भी है. सुनो. और जिसमें क्या नहीं working है. Working. When the switch is at on position, the electromagnet attracts the metal strip of the hammer towards it. फिर उसके बाद था the hammer strikes the gong to produce sound. When the switch is at off position, the hammer loses all its contact with the metal strip. Metal strip है ना? Hammer loses contact. Hammer loses contact and the circuit is broken. The bell continues to ring as electric current flows through the bell circuit. As long as. As मैंने नहीं जाना. Through के spelling. THROUGH. Continues के. किसके? Continues. CONTINUES. Broken. BROKEN. Contact. CONTACT. Hammer. HAMMER. Loses. LOSCS. Position. POSITION. Produce. PRODUCE. Sound. SOUND. Strikes. STRIKES. Towards. TOWARDS. Metal strip. METAL. Strip. STRIP. Position. POSITION. Electromagnetism. ELECTROMAGNETISM. Principle. PRINCIPLE. Insulated. INSULATED. Copper. COPPER. Coil. COIL. Closely. CLOSELY. Fixed. FIXED. Strip. STRIP. Adjusting. ADJUSTING. Screw. SCREW. Changed. CHANGED. Hammer. HAMMER. Gong. GONG. Attached. ATTACHED. Gong. Shaped. SHAPED. Voltage.
voltage, provides provides, battery battery. explain that electric current is due to flow of electric charges इसका ये है ना कि charge flows from a higher level to lower level. Charge flows from a higher level to lower level, and these levels are known as electric potential. Flow of electric charges are due to potential difference, which causes electric current. फिर उसके बाद ये है ना इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम. पोटेंशियल की स्पेलिंग देखना POTTENTIAL POTT पोटेंशियल. गूगल पे सर्च. बुक में देख POTENTIAL POTT कैसे बोलूं लिखा हुआ मैंने. हायर के स्पेलिंग HIGHER डिफरेंस DIFFERENCE. व्हाट इज एन कुछ आएगी ना उनके पीला था पर प्रसाद का तेरा है काला रहता क्या नहीं क्या कहना मगर सुना नहीं. मैंने कोई देखा नहीं क्या मैंने सुना ही नहीं. अब बोलो. What is an electric bell? Mention some different Electric type of bell. cells. Electric cell. Mention some different types of cells and working of tricell. An electric cell transfers chemical energy into electrical energy. Transforms. Transforms the chemical energy into electrical energy by way of chemical reactions of chemicals stored in it. Cells are of many types like lead acid cells, button cells, and dry cells. Dry cell consists of in a dry cell, the cylindrical zinc acts as a negative electrode called cathode, and a graphite rod acts as a positive electrode called anode. A working जो भी था वो process. Find plus and minus sign marked on the cell. The plus sign is marked. Near the small metallic cap on the top of the cell, and minus sign is marked near the base of the cell. Marked near the base of the cell. Connect the wire to the switch. And bulb. When the push button is pressed, the bulb will glow. और इसकी result था the cell, and the cell is the source. The cell is the source of electricity. इसका diagram भी है ना लिखा हुआ मैंने. तो बनाया नहीं है. बनाना कैसे तुम जगह थी मेरे पास.
सोर्स का स्पेलिंग, SOURCE, इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, कनेक्ट, CONNECT, बल्ब, BULB, बटन, BUTTON, प्रेस्ड, PRESSED, मेटालिक, METALLIC, मार्क्ड, MARKED, इसको उधर रखो, टॉर्च, TORCH, कनेक्टिंग, CONNECTING, ग्रेफाइट, GRAPHITE, पॉजिटिव, POSITIVE, इलेक्ट्रोड, ELECTRODE, एनोड, ANODE, इलेक्ट्रोड, ELECTROED, नेगेटिव, NEGATIVE, कैथोड, CATHODE, कंटेनर, CONTAINER, सिलेंड्रिकल, CYLINDERCAL, cylindrical, CYLENDRICAL, तो क्या बोली पहले, लेड एसिड, LEAD, एसिड, ACID, कंसिस्ट, CONSISTS, केमिकल, CHEMICAL, ट्रांसफॉर्म्स, TRANSFORMS,